Good evening, student. After learning about the mechanism of breathing, now in this video we'll try to learn about various volumes and the capacities of lungs. A normal human will respirate at the rate of 12 to 16 breath per minute, and the volume of air which is we are taking in and expelling out can be measured with the help of a simple spirometer. This simple spirometer will give you a graphical representation of various volumes, and by adding those volumes we can calculate various capacities of lungs. So let's try to learn about the pulmonary volumes and capacities in detail. In case of respiratory volumes and capacities, firstly we will see the respiratory, that is pulmonary volumes. As we have mentioned, the respiratory rate, that means the number of inspiration and expiration a person will perform in 1 minute is called as respiratory rate. And the respiratory rate of a normal human in a normal condition is 12 to 16 breaths per minute. This is a normal respiratory rate. A healthy person will breathe 12 to 16 times in 1 minute. Now, in each respiration, a person will inhale certain amount of air and it will expire certain amount of air. Clear? This measurement of air which is inhaled or which is expired is done with the help of a machine which is called as spirometer. So, a simple spirometer is a machine which helps in measuring these volume. A simple spirometer consists of a capsule, a glass capsule kind of thing, in which we are having a seating arrangement. And here we are having two inlets. The person will sit inside the glass capsule, and this inlet is connected with the help of mask to the person. These inlets are connected to cylinders which are kept outside, which is having these pressure knobs. Clear? And the person is instructed to do certain maneuvers. That means whenever the person will respire, he will utilize the air from the cylinder, and a fixed amount of air will get moved in each inspiration of this person. जब भी ये पर्सन एक एयर टाइट कैप्सूल के अंदर बैठेगा और उसको सांस लेना और छोड़ना मास्क की मदद से होगा. सो ये पर्सन जब भी सांस लेगा, ये जो मास्क है वो आउटसाइड सिलेंडर से कनेक्टेड है. सो ये जब भी पर्सन सांस लेगा तो सिलेंडर में से एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर रिलीज होगी. जितनी भी एयर वो सांस से इंस्पायर करेगा उतनी सिलेंडर में से एयर कम हो जाएगी. और वेन एवर दिस पर्सन विल एक्सपायरेशन की एयर जो है वो इस सिलेंडर में जाके जमा हो जाएगी. सो यहाँ सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ जाएगा. सो बाय यूजिंग दिस सिंपल टेक्निक वी कैन कैलकुलेट कितनी एयर एक पर्सन ने एक इंस्पिरेशन में इंस्पायर की यानी अंदर ली लंग्स के, और कितनी एयर उस पर्सन ने एक एक्सपिरेशन में एक्सपायर की.
ठीक है. So this is a setup in which we are having this airtight glass capsule and under which the person will sit and he will respirate with the help of a mask which are attached to the cylinders. Clear? Now the volume changes in the cylinder can be represented graphically. So firstly we have to understand a normal graphical representation of spirometer and then we can understand the volume. It is very simple. So let's say for example it is a 0.0 and this is the volume of air which we will represent. Okay, so this is 500 ml, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 and 3500. So this is the volume of air. It is a volume of air. Clear? And this is the inspiration volume. Whenever we are having the plus volume, they are the inspiratory volume. And on the negative side, we are having here, we are having 0. On here, we are having minus 500, 1000, 1500, 2000. So this is also a volume of air, but it is expiratory volume. Clear? This one is the inspiratory volume. As the volume will get drained from the cylinder, it is mentioned on this side, and whatever volume of air the person will expire, it will be mentioned on negative side of the spirometer. Now in each inspiration and expiration, a normal person will inhale 500 ml of air. This 500 ml of air which a normal person will inspire and expire in normal condition without any voluntary effect. Respiration is a इनवॉलंटरी प्रोसेस, क्योंकि हमें जब भी हम सांस लेते हैं या तो फिर हम सांस छोड़ते हैं, हमें इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है. ये जो है वो अनकॉन्शियसली होता है, इनवॉलंटरी प्रोसेस है. हमें कभी भी ध्यान नहीं रखना पड़ता कि भाई अब सांस ली अब छोड़नी है या तो अब सांस छोड़ी अब लेनी है. ये हमें कभी भी ध्यान नहीं रखना पड़ता. इट इज़ अ इनवॉलंटरी प्रोसेस. और इस इनवॉलंटरी प्रोसेस के दरम्यान जो भी इंस्पायर्ड एयर है या तो फिर जो भी एक्सपायर्ड एयर है उसका वॉल्यूम होता है 500 ml. सो ये जो 500 ml का वॉल्यूम है विच अ नॉर्मल पर्सन इंस्पायर एंड एक्सपायर इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम. तो दैट इज अ फर्स्ट वॉल्यूम. सो यहाँ पे ये 500 ml का मार्किंग लाइन है. सो जब भी पर्सन सांस लेगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर पॉजिटिव साइड में जाएगा. सो वी कैन शो इट बाय अ डिफरेंट कलर. सो जब भी पर्सन सांस लेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. ओके, सो द कर्व विल ऑन स्पायरोमेट्री विल शो यू अ पॉजिटिव figure. Clear? And whenever this person will expire, the volume will again return back to a normal position, that is 0. Okay, so after achieving the peak, the curve will again go towards the 0 value. Clear for this thing? Now normal inspiration and normal expiration will keep on going. So a person will inspire it, so this is the inspiratory volume, and a person will expire it, so this is the expiratory volume. Okay, so 500 ml of air is inspired and 500 ml of air is expired. Again the 500 air is inspired and 500 air is expired. So this pattern, when we get plotted on the spirometric graph, will have a wavy appearance. This volume will show you a wavy appearance, and that's why this particular volume is called as tidal volume. Clear? So we are having our first volume, that is the tidal volume. Tidal volume is the amount of air inspired and expired during normal respiration. So it is the amount of air inspire and expire during normal respiration, and this volume is 500 ml. This volume is 500 ml. So
in one respiration, person will inspire 500 ml of air and it will expire 500 ml of air, and a normal person will breathe for 12 to 16 times. So if we multiply this 500 with 12 or 16, we will get a volume of 6000 to 8000 ml per minute. Clear? So actually, if we calculate the respiratory cycle, then a respiratory cycle, if a person is inspiring 12 times in a minute, that means a respiratory cycle, one respiratory cycle will consist of 5 seconds, because there are 60 seconds in 1 minute, and if a person is respiring for 12 times, then it will comes to 5 seconds. So one respiratory cycle will constitute of time of 5 seconds. Clear? Then 500 ml of air will get inspired and 500 ml of air will get expired, but the person will perform this process 12 times in a minute. So normally if we multiply this 500 ml volume, then we will get 6000 or 8000 ml of volume in 1 minute. So you are clear about the tidal volume. Now concentrate on this point. This particular point is a peak of normal inspiration. So whenever a person will reach up to this point is a peak of normal inspiration. But we can have capacity to forcefully inspire the volume after we have done with normal inspiration. हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद भी फोर्सफुली और हवा अंदर इंस्पायर कर सकते हैं। अब जब भी हम ये नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद शुरू करेंगे, तो वो हवा जो अंदर आएंगी उसे, वो तो हमारा रिजर्व वॉल्यूम है, क्योंकि हम नॉर्मली उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन हम फोर्सफुली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली इनहेल करते हैं, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो यहाँ पे नॉर्मल इंस्पायरेशन खत्म हो गया। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन है जिसने अभी एक्सपायरेशन किया और यहाँ उसका एक्सपायरेशन खत्म हो गया। सो दिस इज अ पॉइंट विच रिप्रेजेंट द नॉर्मल एक्सपायरेशन पॉइंट, एंड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन द पर्सन विल अगेन परफॉर्म द नॉर्मल इंस्पायरेशन। नाउ हियर इज द पीक पॉइंट ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन. After normal inspiration, the person is able to forcefully inspire the air, and whenever the person will forcefully inspire the air, as the person is performing inspiration, the volume of air will get increased in positive direction. Okay, so जब भी हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फिर से हवा खींचना चालू करेंगे, तो हवा खींचेंगे और खींचेंगे और अंदर खींचेंगे और अंदर खींचेंगे, अब बस हो गया। सो ये आ गया पीक पॉइंट ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। सो ये जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर है, वी ऑलरेडी मेंशन कि दिस साइड ऑफ ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड। सो ये जितना भी एयर का वॉल्यूम है विच इज इंस्पायर्ड ओवर एंड अबाउट the normal inspiration. Clear? A volume of air which is inspired over and above, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद by forceful inspiration is called as inspiratory reserve volume. So the second volume what we are having is inspiratory reserve volume. So what will be the definition of inspiratory reserve volume? The amount of air which is inspired by forceful inspiration over and above the normal inspiration.
is called as inspiratory reserve volume, or which is simply represented as IRV. Okay, inspiratory reserve volume or tidal volume is simply represented as TV. क्लियर? सो हमें इतने वॉल्यूम की डेफिनेशन बतानी है. सो ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है एयर का जो हमने फोर्सफुली इंस्पायर किया ओवर एंड अबाउ. कहां पे? नॉर्मल इंस्पायरेशन होने के बाद में. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर विच इज फोर्सफुली इंस्पायर्ड ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्लियर फॉर दिस थिंग? एंड वैल्यूज फॉर inspiratory reserve volume is normal value is 2500 ml to 3000 ml. So a normal person have 5 times or 6 times the capacity of inspiratory reserve volume. क्योंकि tidal volume तो 500 ml का है और 500 ml से 5 पट या तो 6 पट ज़्यादा हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी है जो हम नॉर्मल कंडीशन में यूज़ नहीं करते. लेकिन हम जब भी डीप इनहेलेशन करते हैं तो ये जो कैपेसिटी है एट द पीक ऑफ डीप इनहेलेशन इज 2500 और 3000 ml, दैट इज 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स द टाइडल वॉल्यूम. अब जैसे ही हमारा डीप इनहेलेशन खत्म होता है फिर से दिस पर्सन विल रिलीज आउट द एयर एंड वी कैन हिट अ पॉइंट ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन. क्लियर फॉर दिस थिंग? नाउ अब ये पॉइंट पे आने के बाद भी वी आर कैपेबल ऑफ गिविंग आउट और रिलीजिंग आउट एयर बाय फोर्सफुल इफेक्ट. By conscious effect we can again are capable to release out the air. Now as we are releasing out the air, this curve will be represented on the negative side. Clear? Now this is the amount of air which is exhale after, this is the point where the normal expiration ends. So here is a point where the normal expiration ends and this is the point where normal inspiration ends. So we are releasing out this much amount of air after normal expiration. So this is the air which is present in the lung but it can get released out by forceful expiration only. Clear? So this volume of air which we are releasing out forcefully is called as expiratory reserved volume. Okay, in normal condition we generally do not release that volume. That volume is called as expiratory reserve volume, which is called as ERV, expiratory reserve volume. Okay, what can be the definition of this expiratory reserve volume? क्या definition होगी? तो ये तो amount of air है, ऐसी air जो हमने normal expiration के बाद forcefully बाहर निकाली. So the definition will be a amount of air which can be forcefully expired after normal expiration is called as expiratory reserve volume. So it is the amount of air which can be forcefully expire after normal expiration is called as expiratory reserve volume. And the values for expiratory reserve volume are 1000 to 1100 ml. Do remember the values because most of the time the question will come on the values also. Clear? So this is a expiratory reserve volume. This is tidal volume. This is inspiratory reserve volume. This is expiratory reserve volume. और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकालने के बाद भी हमारे लंग्स में जो हवा बचती है
the amount of air which will remain in the lung after forceful expiration is called as residual volume. ये हवा lungs में से कभी भी बाहर नहीं आती. Okay, so that much amount of air which will remain inside the lung after forceful एक्सपायरेशन. ये हो गया पॉइंट जहां हमारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन खत्म हुआ. उसके बाद भी जो हवा बची हुई है लंग्स में उसे हम कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम. सो द फोर्थ वॉल्यूम विच वी गेट इज द रेसिड्यूअल वॉल्यूम. इट इज द अमाउंट of air which remains in the lung कब after forceful expiration. forceful expiration करने के बाद भी जो बची हुई हवा है लंग्स में उसे हम कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम. ये रेसिड्यूअल वॉल्यूम हम गिन नहीं सकते. डू रिमेंबर दिस एमसीक्यू. रेसिड्यूअल वॉल्यूम हम गिन नहीं सकते क्योंकि लंग्स के अंदर कितनी हवा है ये हम गिन नहीं सकते. बट this we are having an abbreviatory figure for this thing, and the volume, residual volume, which is mentioned in NCERT book is 1000 to 1200 ml. 1000 to 1200 ml. Here do remember one point कि the residual volume is more compared to the expiratory reserve volume, क्योंकि expiratory reserve volume की जो फिगर है वो 1100 है और residual volume की जो फिगर है वो 1200 है. तो ये ध्यान में रखना कि residual volume का जो फिगर है वो फिगर expiratory reserve volume से ज़्यादा है और residual volume हम गिन नहीं सकते. So these are the four volumes which are important from the NCERT point of view. The first one is a tidal volume. The second one is the inspiratory reserve volume. The third is the expiratory reserve volume, and the fourth is the residual volume. Here on graph we can represent all the volumes. The person will inspire and expire normally 500 ml of air. This volume is called as tidal volume. This point represents the peak of inspiration, and the amount of air which is inspired after normal inspiration is called as inspiratory reserve volume. This point represents the point of normal expiration, and the amount of air which is expired forcefully after normal expiration is called as expiratory reserve volume. But expiratory reserve volume भी लंग से बाहर निकालने के बाद फिर भी कुछ एयर लंग्स में बच जाती है और उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जो हम गिन नहीं सकते. तो जैसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अचीव होता है, द पर्सन अगेन इनहेल्ड एयर टू फिल दिस गैप एंड ही विल अचीव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ respiration, and then again he will continues with tidal volumes. Clear for this thing? So in this way a spirometer will give you a graph which are useful in studying and calculating the various volumes of the lung. Now by combining these volumes of lung we can get various lungs capacity, that is also called as pulmonary capacity. So now let's try to learn about the various capacities of lungs.